अगर आप ग्लोबल विलेज आने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो यू नीड टू वॉच दिस वीडियो। Global Village is one of the best tourist attractions in the world. It contains 27 countries pavilions, it have 2000 stalls, and it have more than 50 restaurants where you can enjoy the taste of many countries in the world. If you wanna go with the car, you need to leave very early. क्योंकि अगर आप 9 से 5 के दरमियान जाएं तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलेगी, इतनी ज़्यादा कि E311 से ग्लोबल विलेज वाले एग्जिट में पार्किंग तक आपको 30 मिनट लग जाएंगे और ये टोटल 3 किलोमीटर का फासला है। ग्लोबल विलेज की एंट्री फ्री नहीं है। यू नीड टू पे 30 दिरहम्स पर हेड टू एंटर इन ग्लोबल विलेज। द टिकट्स यू कैन बाय ऑनलाइन और यू कैन बाय ऑन द टिकट काउंटर ऑन द मेन एंट्रेंस ऑफ द ग्लोबल विलेज। After you enter global village, the environment will be like this. And then you will reach the main stage. स्टेज के साथ चलते चलते मैं सबसे पहले इस जगह पर रुका। Hello. Okay. He asked me to tag on Instagram, so I took his Insta ID. Okay. Ticket. Okay. Then I entered in Thailand. So अभी मैं अमेरिका में दाखिल हूँ। This is how American streets will look like as per them. So if you go to Karakib, this is a very cheap outlet. यहाँ से मैंने पहले भी एक बार शूज़ खरीदे थे। It's very cheap. You can see. अगर आप कोरिया में एंटर होंगे तो what you will see is gonna be something like this. This is what Korea looks like inside. This is how global village is made. There is a ticket counter in rides section where you can buy a card and you can recharge that. जब आप कार्ड को रिचार्ज करते हो तो आपको कार्ड में पॉइंट मिलते हैं जो आप राइड लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब आप फूड स्ट्रीट में एंटर होंगे तो खुशबुएं आपकी भूख को और बढ़ा देंगी। कबाब, पराठा, हलीम, निहारी, बुंदुखान, लज़्ज़त, जायका, मयार, सब एक साथ। फूड स्ट्रीट के बाद आप इंडियन पवेलियन में एंटर होंगे जहां आपको बहुत सी ज्वेलरी की शॉप्स नज़र आएंगी, कपड़ों की शॉप्स नज़र आएंगी, जूतों की शॉप्स नज़र आएंगी और इंडियन फास्ट फूड आपको उधर आसानी से मिल सकता है। अगर आप खजूरें ख़रीदना चाहते हो देन गो टू सऊदी अरेबिया, और मैंने उधर से तलबीना ख़रीदा था जो सऊदीया की एक प्रोडक्ट है। Can you give me one big? One big? Will you give me for 50 or no? You want one big? Okay.
50, huh? What? 50, Why, brother? please. Brother, this one, look. Yeah, This one 40, okay? Yeah. This 400 gram. okay. 400 gram. Yeah, This one 800 gram. This double. okay. This cost 80. Okay. Okay? I make more discount. Okay. 60. Now, I'm not gonna tell you about all the countries and every single place in Global Village. You should go by yourself and walk around and see and enjoy. So, Global Village is a mixture of the culture of many countries in the world, and it's a very lovely place to go and explore. So, I really recommend going there and exploring Global Village. Thank you so much for watching the video, and I hope you'll subscribe and watch more of the videos because I'm gonna make more videos about many other places in Dubai. Thank you so much.